Okay, very good. So I'm really glad with all the answers that you have given. For all the answers that you have given, please give a big round of applause to everyone. Very good, very good, very nice. Let us understand and remember, fund flow management of any business is very critical and very crucial for any business. And I'm sure those of you who are practicing will know it. Those of you who are working also will know it, because the management is always focused about the fund flow, because they are always worried to find out कि कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ पैसा आ रहा है. Now, I don't want to give you the answer. I want to help you to find out the answer by yourself. क्यों वो बोलते हैं ना कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो हर महीने उसके घर एक टोकरी फ्रूट्स की भेजते जाओ, या मतलब एक टोकरी मछलियों के भेजते जाओ. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू हैव फिशेस बाय द वे. ओनली एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू. कहते हैं कि किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसको हर महीने हर दिन उसको घर पे एक बास्केट फुल ऑफ फिशेस भेजते जाओ. एक साल तक भेजो. एक साल तक आपकी घर बैठ के फिश खा खा के वो आदमी इतना निकम्मा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा. एक साल के बाद आपको फिश उसको देना बंद कर दो, वो आदमी कहीं जाके सुसाइड कर लेगा, क्योंकि उसको काम करने की आदत ही नहीं रहेगी. और अगर आपको किसी से दोस्ती निभानी है तो एक दिन अपने साथ में लेके जाओ और उसको फिशिंग करना सिखा दो. वो जिंदगी भर के लिए वो आदमी आपको धन्यवाद देगा. यस और नो? यस. तो मेरा भी वही मकसद है. मैं आपको रेडी आंसर देना नहीं चाहता हूँ. I want to empower you to find out the answers by yourself. So what are the cardinal principles of fund flow management? छोटा business हो, बड़ा business हो, doesn't really matter. All the businesses have to follow these principles that I am sharing with you. So the first principle is long-term sources should be more than long-term applications. Yes or no? Yes. आप का क्लाइंट हो या आपकी खुद की प्रैक्टिस हो, दोनों जगह पे मैं बोलता हूं, विल यू प्रेफर अ सिचुएशन कि आपकी प्रैक्टिस में लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस ज्यादा हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज कम हैं. विल यू बी हैप्पी विद दैट? विल यू बी हैप्पी विद दैट? मंदर, क्या लगता है आपको? विल यू बी हैप्पी विद दैट सिचुएशन कि लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन है, कि लॉन्ग टर्म खर्चे आपके ज्यादा हैं लेकिन लॉन्ग टर्म सोर्सेज कम हैं? विल यू बी हैप्पी अबाउट दैट? ऑफ कोर्स नॉट. सो द फर्स्ट कार्डिनल प्रिंसिपल इज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑफ फंड फ्लो मैनेजमेंट कि आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज शुड ऑलवेज बी मोर देन योर लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन. नंबर 2, long-term applications should be financed through long-term sources. Are you with me? Yes. Do you disagree with any of these things that I am discussing with you? Please tell me so. तो आपकी प्रैक्टिस हो, आपका बिजनेस हो, आप वैल्यूएशन कर रहे हैं, this is what you have to take into account. Long-term applications should always be financed through long-term sources. अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ILFS क्यों डूबी मालूम है आपको? ILFS क्यों डूबी? ILFS के पीछे डूबने के बहुत सारे कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण जो है ILFS के डूबने के पीछे वो ये कि उन्होंने लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस को शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फंड किया. करेक्ट. और जब वो पकड़ में आ गए तो पूरा उनका भवन ढह गया है. So corollary to it is short-term sources not to be used for long-term applications unless you want to commit suicide. अगर आपको सुसाइड कमिट करनी है तो आप तीसरे नंबर का रूल फॉलो करिए. आई कैन टेल यू, ट्रेन से बच सकते हो, पंखे से बच सकते हो, पहाड़ के गिर के बच सकते हो, लेकिन तीसरा वाला टेक्निक यूज किया तो भगवान भी नहीं बचा सकता आपको. Using short-term sources for long-term application is the surest way of committing suicide. And this is what would happen. All the businesses that fail anywhere in the world, remember they fail because in their bid to get out of the crisis that they were in, they used the short-term sources for long-term applications. And we have seen at multiple businesses, sir, where the promoters
spend more than 30% of their time just arranging for short-term funding. Absolutely. यार सैलरी देनी है, रेंट देना है, यार ये मर जाते हैं बेचारे। 30% टाइम दे स्पेंडिंग प्रोडक्टिव काम की जगह फंड अरेंजमेंट में लगे रह जाते हैं। आपको क्या लगता है? VG सिद्धार्थ, classic example, very unfortunate. Such a fantastic entrepreneur, created so much of wealth otherwise. But what did he do? He was a victim not of the system. He was the victim of the fact that he did not have anybody along with him who could tell him what is financial management and who could tell him authoritatively what is financial management. He messed it up so badly. What he did, he was doing again the same thing. And it's just a coincidence that I mentioned to you before that the third thing is the surest way of committing suicide. Unfortunately, you can see it very clearly. It is directly applicable in case of VG Siddharth. Correct. What forced him to commit suicide? Same thing. Same thing. So that is rule number 3. Rule number 4. Part of working capital should be financed through long-term sources. अगर आपको याद होगा, हमने वर्किंग कैपिटल का केस डिस्कस किया और आपको याद होगा कि 1400 was the total amount initially I'm saying was the total amount of gap. आप बैंक के पास गए, बैंक ने आपको 1400 दिया गया, बैंक ने आपको कितना दिया? 75%. 1350, 350 bank told you to put from your pocket. So that is rule number 4. Part of working capital should be funded through long-term sources. And rule number 5. Cost and risk of financing should be minimized. This is financial management, this is business management, this is financial statement analysis, and this is what you have to use in valuation. अब आप आपके numbers को दोबारा से देखिए और आप मुझे बताइए. Should I go to the next slide? Yes, sir. Can I? So now please go back to your numbers once again. And you only give me the answer as to what it should be. Should it be A? Should it be B? Should it be C? Should it be D? Or should it be E? B. Everybody, please join your hands and give a big round of applause. See, remember, the moment you have the reference points, the moment you have parameters, the moment you have guidelines, life becomes so easy. And this is what I wish somebody told VG Siddharth. Look, you're growing quite well. You're already billionaire. You already have so much of wealth that just not even 1% of the people on this earth will have the kind of wealth that you have. Slow down. Don't over leverage. And definitely not leverage by funding the long-term applications with the help of short-term sources. I wish somebody would have told him. But unfortunately, this is what happens. When you get in the company of the wrong people, this is how you suffer. So country lost a fantastic entrepreneur otherwise. Okay. So this is how you will do your fund flow management.